सुमते वासवानो अस्य सप्तमोऽध्यायः शिशुवासो शिशुपालेषु साधुषु पुण्यकेशापि दुर्मति प्रलोकागतानां च कुर्वं परोख्या न्यसौरिदम् एकोपराते संक्रुद्धो गतापानि विकम्पयन् परिष्पद्भासिनो महाराजो मा सट्टु विदिश्यते तं तथायामालोक्यो गदामाता सतरम् अवप्लुतो रसात् कृष्णो सिन्धुं बेलेव प्रत्यह गदामुज्जन्यो करशो मुकुन्दं प्राहुर्मधु दिष्टा आनन्द्योमुद्दिश्यं पठोगत त्वं मातुलेयो नो कृष्णो मित्राधं मां विद्यांसते तस्वाङ्गर्यामन्दो हनिषे वृषकल्पया तद्ध्यानान्वितो क्यारो मित्राणां मित्रवत्सला बन्धुरूपा परिदं ध्यामो व्याधं खीसरितं यथा एवं रूपै ख्यतं तन्वाक्ये कृष्णो त्वत्तैवो दीपन् गरयातारयामुर्ध्नि सिंहवावज्यो नरत्यज गदयाभियतोपातो नोजसालो समुद्भो कृष्णोऽपि तामहं गुर्वा कौमुदक्या सनान्तरे गदादि निर्विनवादाय उद्बलं रुधिरमुखा प्रसज्यो केशवाबुहि हरिन्धरिण्यां न्यपद्यद्यशु ततो सुभूतातरं ज्योति कृष्णमावीश तद्भुतं परिषतां सर्वभूतानां यथा त्यज्यवधि निप वीरस्तथो तद्भ्राता भ्रातुषो कवयं प्रीतो आगमत्सन्निशाभ्यवर्षासंसञ्जिकांक्षया तैषो चापदतो कृष्ण चक्रेणो क्षुषेनिम्ना शिरोधारो राजेन्द्रो सकरीतं सकुन्दलम् एवं सौवञ्चो छलञ्चो वक्रं महानुभवं भट्वा दुर्विशानयि पीडितो सुरामानवै मुनिभिः सिद्धगन्धर्वै विद्याधर्महोरगि अप्सरोभिः प्रीतिगणै नर्या किन्नरोर्नगि उपज्ञामान विजयो कुसुमेन विधिभिः वृतञ्चो हजारे प्राणसंहितां पुरीम् एवं योगेश्वरो कृष्णो भावान् जगदेश्वरो ईयते पशुदिशीनां मीलितो जाति स शूटाजुरेद्यं राजन् कुरुनां सोपन्नवैत्यरसाभिषे विवाक्येनो मध्यस्थे अर्थविजौ किल स्नातावादे सन्द्रपा देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिजातं सोटं ब्राह्मणसंवृतः अपि शूटकं बिन्दु सरस्वतीकूटं सुदर्शयन् विशालं ब्रह्मतेसिञ्चो चक्रं प्रासीं सरस्वतीं धनुरानशो नयनेभो गङ्गामनुषो भारतो जगामो निमिषं ऋषयो सत्रमासत तमागतन्त विप्रेभ्यो मुनियो जगत्सत्रिणा अव्यञ्जोऽथन्यायं प्रणम्यायोचर्षन् सो अर्चितो सो परिवार क्रीटासन परिग्रहो गोमर्शनमासीनं महर्षि सम्यक् अपृच्छानमीमां सुतमागत प्रहराञ्जलिम् अध्यासनच्युतान् विप्रां कोऽपि भिक्षो माधव कस्मात् सा भीमान् विप्राणां मध्यस्थे प्रतिलोमजा धनपालास्तवंशांशो दशमर्हति दुर्मति ऋषिर्भवतो भूता शिष्योद्धीता भुवनेषु स्वोतिहासात् पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वश अरन्धासा वितैषु वृथा पनितमानिन नो गुहायो भवन्ति नो नोटेसेभ्यो जितात्मन एततो हि लोकेऽस्मिन् तारो मया कृतो बध्यामि धर्मविध्वंसे नोपादकी च नो किया यथावृता भवान् निवृत्तो अवसानपि तद्विद्वातो कुशाग्रेणो करस्थेनाहयत् प्रभु हाहेति वादिनो सर्वे मुनयो खिन्नमानसा ऊषु संकर्षणं देव धर्मस्ते क्रीतः प्रभा ऐषो ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिः जन्मदिन आयुषा केवलं तावद् सत्रं समापति अजानति वासवास ब्रह्मवादो यथा योगेश्वरी शोभितो नन्नयेपि नियामः अजेत ब्रह्मटिखाय पावनं लोकपावनं सरिष्यति भवान् लोकसंग्रामेश्वर निशोदितो शिवन्वास सरिसेवत निर्वेशं लोकानुग्रकारका नियमावृष्टे कल्पे धावान् सूतु विकृष्टां दृगमासु वित्यज्ञं सुदेशवादकुन् आसादितं रोसंदचो सारेजो अजोमाया येदिशेषु अस्तैषु तव बीजेषु मृडासमीवसु यथा तद्विधानेषु शैत्यं वामो बीजितां वनवासो आत्मा वै पुत्रो उत्पन्नो इति वेदानुशासनं तस्मादेषु विभ्या आयुरिन्द्रियसतताम्
किंबा कामो मुनिश्रेष्ठो व्रताहंकृवैष्ठो अजानता सर्वचित्तं तथा मे चिंतितं बुधा ऋषेषु इलेषु श्रुतो घोरो बल्लनो नाम दानवो सोऽद्वयमिति सर्वमेत्यो पर्वणि पर्वणि तं पापं तरी दशर्हं तन्नो शुश्रूषणं परम् आपूय सुनितमात्रा त्वं कामाभ्याभीषणं तदचो भरतं पर्षन् परितो सुषमायिता सरित्वा द्वारसा मासा तीर्थं विशुचिः इति संभारमापानं संवैयासिक्यां दशमस्कन्धे बलदेवचरिते बलवधो नामोपक्रमो अष्टासप्ततितमोऽध्याय श्रीमद्रावणकृष्णसप्तानंद बल हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 19तमोऽध्याय श्रीवासो ततो परवन्यापारे प्रसन्नपांशुपरिषो भीमो वायुरबुद्राजन् पूयन्त गण्डसु सर्वशः तर्वमे ध्यानवर्षं वल्लनेषु निर्मितम् अभरशालायां तद्याशूलि तं विलोक्याभिषर्गायो भिन्नजिञ्जासेवसनं तत्र धम्राशकां यद्वंशो भ्रूगुलगाटिहम् सस्मारो मूसलं रामो परसैनाविदाटो हलन्तु दित्यादमनं ते तूर्णमुपश्यतु तमाग्रस्यो हलाग्रेणो बल्लनं गगनेश्वरं मूसलेनाहरत्कुद्धो बुद्धि ब्रह्माद्वहं बल स्वपरिद्भवी निर्भिन्नो लोकति समर्पयसि जन्मुञ्चन्तानि शैलोतरो भद्राटोरुनो संस्तुत्यो मुनियो रामं गृह्य पियसाधिशो निव्यासन्त महाभागाः वितघ्नं विविराजथा वैजयन्तीं तदुर्माल्यं श्रीधामाप्लानपङ्कजं रामाय वयसि दिव्यो दिव्यन्यभरणानि च अथोतैरनुज्ञात कौशिकीयां येन ब्राह्मणे स्नात्वा सरोवरामागतं सरजूरसस्रवत् अनुश्रोतेनो सरजु प्रगायामुद्वयन्ति स्नात्वा सन्दर्प्यो देवादिं जगामो पुलहस्य गोपतिं गणिकेन स्नाता विपासं स्वनपाप्रजो गयां गत्वा पीतिनष्टा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्वेशो महेन्द्रादो रामं दृष्ट्वाभिदिजो सतुघोरापुरीं येषां पम्पां भीमचिन्तर स्कन्दं दृष्ट्वादो रामो श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्टादीदं व्यङ्कटं प्रभु कामकोष्ठीं पुरीं काञ्चीं काव्यञ्चु सर्वशां श्रीरङ्गख्यां महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरि ऋषभाद्यं हरिक्षेत्रं दक्षिणां मथुरां यथा सामुद्रं श्रीतुमागवत् महापाटकनाशनं तत्रायुधवादादादि अनुर्ब्राह्मणेभ्यो लीलायुधो कृतमालां तम्रपर्णिं मलयन्तु कूलाशयम् तत्रागमं समेत्यो नमस्कृत्य भाव्यतो जोषिना तेन जोषित् अनुज्ञातो गतोऽम्यहं दक्षिणं तत्रो कन्याख्यां दुर्गां देवी स्वरसो
तत्र फलमासायो पंचाशरमुत्तमां विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्श वायुतं ततोऽतिव्रज्य भगवान् केवलांशु त्रिगतान् गोकर्णाख्यां शिवक्षेत्रं सन्निध्यं यत्रो भूयति अर्जां दैपानदृष्टा सुपारक्यां यामश्वतापिं पयोष्णिं निर्विद्यामुपनिष्णाथो दण्डकं प्राविशदेवानमुत्रो महिष्पतिपुरी मानुषीत्यसमोऽस्पृश्यो प्रवासं पुनरागमत् श्रुतादिजै कथ्यमतां कथमानं कुर्वा पाण्डवेन संयुज्य परिसर्जान्यां भायं निरीतं भुवः सो भीमार्जुना धनराजध्यां युध्येतो अमृजे वारिशन् विनशनं जगामो जलनन्दनः जुरिश्रेष्ठं दृष्ट्वा जमो कृष्णार्जुनावपि अभिभाटातुं कृष्णं विषमभ्यरागति गदापानि उभौ दृष्ट्वा संलब्धौ दिदयेनो मण्डलानि विचित्राणि सरन्तो विरमब्रवीत् जोवां तुल्यमलो वीरो हे राजन् हे विकोदरो एवं प्राणाधिकं मन्ये उदैकं शिखयाधिकं तस्मादेककटस्येहो जीवयो समवीर्ये नो लिखिते जीवोन्ये भा वीरमत्फलयजने नो तद्व्याकन्तव्योतर्व्यासुनि पाठवन् अनुकम्पानिन्दूचं तुष्कितानि स दिष्टं तरुणो ब्रह्माणो रामो द्वारपतिं जजो उग्रसेनादेवी प्रीतैरस्मादेवी समुपागत त्वं पुनर्नैवि सम्प्राप्त तयोजातनमुदा क्रूटङ्गं पृथिवी सर्वैः निवृताखिलभाखिलनिवाग्रहं तद्यो विशुद्धं विज्ञानभावान् वितरति तो जैनात्मजो विशलः स्यात् विशलं मम सपत्न्या भारविस्नातो जातो बन्धुरिवात्मजो रेमे दर्शनादेशु सुवासास्थलङ्कृता यदि विलास्यानि बलेषु बलशालिनो अनन्तश्यामलं प्राजो मायामर्तेषु सन्ति जो अनुस्पयेतो रामेषु कर्मणाद्भूतकर्मणो सायं प्रातः अनन्तेषु विष्णुशोदयितो भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चविंशतिकां दशमस्कन्धे बलदेवतीर्थयात्रायां निरूपणं नाम एकोनशीतितमोऽध्यायः श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्णप्रचारेण बल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण आशीतितमोऽध्यायो श्रीराजोवाच भवान् जाने जाने मुकुन्देशो महात्मनो गिरिजां ज्ञान अभिर्देशो स्तोतुमि साम्य है प्रभ कोनुसुरा सविब्रह्मन् उत्तमश्लोकघटा नियमितो विशेषज्ञो विषन्ना कामं मार्गम् सा वाग्मया तयि गुणान् गीयते करुषो तत्कर्म करुन् धनस्य मनस्यो स्मर्येण दन्तन्नासनेषु शृणोति तत्पुण्यकथासु कर्ण श्रीर्षु तैषोऽविङ्गालवेतरेव यत्पैषति तद्धीसख्यु अङ्गानि विष्णुषु तज्जानना पारुरकां जानी भजन्ति नित्यं श्रुतोवासो विशुरातेन संस्कृतो भावान् बादराणि वासुदेवे भवति निमग्नाधियोग्रहि श्रीवासो कृष्णासित् सदा कचित् ब्रह्मणो भ्रवितमो विरक्तो इन्द्रार्थेषु प्रशान्तात्मात्केन्द्रियः दृश्योपनयनो प्रथमानुज्ञास्वामि तथा भर्जा कुशलेषु शिक्षामासो तथा विधः पतिव्रता पतिं प्राहुम्नाथा वदनेन सा दरिद्रं शीलना सुना वै विस्माना विगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतो सखा साक्षात् श्रीयते पतिं ब्राह्मण्येषु शरण्येषु भावान् सरतर्षभ तां वै महाभाव साधना अपि परिभ्रमं तैषामि द्रविणा भूरि श्रियति हे कुटुम्बिनी अस्ति यधुना द्वारवत्यां भूतविष्णान्तकेशा स्मृतो अपाठक अमलात्मानि विजस्यति किमन्नर्थ कामान् भजता न चाभीमन् जगद्गुरु सो येषो भार्याया विप्रो बहुशो प्राजुतो मुहुः
अयं हि परमो लाभो उत्तमश्लोकदर्शनः इति सञ्चिन्त्यो मनसा गमनायामतां गते आपत्य पायनं किञ्चिद्गीहे कल्याणदीयतां दादिता चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृच्छु तण्डुलान् जलखण्डेन तान् बध्ना भरते प्राडुपायन कोतानादा विप्रव्याजो द्वारकाङ्कितो कृष्णदर्शनं मध्यं कथं शारीरिचिन्तनं त्रीणि गुल्मन्यवितानि ते शुभख्यांशु शोधिजो विप्रो अगमांशु कविष्णीनां गृहेष्वादिश्रुतिकर्मिणां गृहं तस्यासहस्राणां हीनांशो हरेदिजो रीरेव सैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया परजाक्षमाश्रितो ससुथा सद्देव दुर्भ्यां प्रजा गृह्मुदा सख्युप्रेषु विप्रस्ये सङ्गसङ्गातिनिवृतो शीतो विमुञ्चत् बिन्दुन्यत्रभ्यां पुष्करेक्षणा तथोपवेशपर्यङ्के स्वयं सख्यु सङ्कर्षणो उदारितानि चाद्योपादोपादवनिजनि अग्रहीनस्याराधन भावान् लोकपावनो व्यालिङ्गदिव्यगन्धेनो चन्दना गुरु कुङ्कुमै धूपै सुरभिमित्रं प्रदीपाभिः मुदा अर्चित्वा विद्युतामूलं घंसो स्वागतमब्रवीत् कुशजङ्मानं क्षेमं दीर्घं धनसमन्वितं देवी प्रजाहरसख्यात् आरभ्य वदनेन वै अन्तःपुरवर्जे देव्या अदृष्ट्वा कृशनामलकृतिना विस्मितो अभूत् प्रीत्वा अवधूतं सवादितं किमेनोक्तं पुण्यवधूते भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन् गीतेशे नारमेव जोषो त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संवृता परशङ्कां श्रिया हित्वा परित्यक्तो अग्रजो यथा कथयाञ्चा क्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो मृताराजन करो वृद्ध्यो परस्परं शिवन्वासो अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञो भार्योरासरिषिणो वा प्रायो गृहेषु ते चित्त कामभीता तथा नैवासिता प्रेषि विद्वन्धनेषु विदं हि मे केचि कुर्वन्ति कर्माणि कामैराहो शेषा त्यजप्रहिता देवैर्जरां लोकसङ्ग्रहं कचित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् सरति नौयशो लीला विज्ञायो विज्ञेयं तमसो पारमश्नुते सो वै सत्कर्मणां सख्यार्पीते ह्यो समभो अद्यो अङ्गो दशामि मां दशाहं ज्ञानयो गुरु नन्नर्थकोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रममितामिहो मे देवया गुरुना वासा तरन्त्याठो वर्णव नामिद्यापितार्यावन् जपिषन्मेव स्वतुरेषां सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया तथा अपि नो स्वर्जिते ब्रह्मन् वृतं निवसतां गुरु गुरुदारै चोदितानामञ्जनायनेकसि प्रविष्टानां महारण्यमर्पतो सुमतिजो वर्षवर्षामहोत्तिभ्रमिष्ठुरासनेत्नुव सूर्यचास्त्रं घटकस्तावतमसा सावतारिषो निम्नं कुरु जलशयं नो प्रजति कञ्चन भयं भीषं ततो महानीलाम्बूढनुर्विद्यमानो मुहुरमुसंप्लवे देशो विरजो त्वसा परस्परं पने घृतमस्ता परिबर्हि मातुरा एतद्विदित्वा उदीते रवो सन्दीपनिर्गुरु अन्यस्य मानो नो शिष्यानापर्यो पैशरातुरम् अहो हे पुत्रकाजूयं अधिदूतार्घिता आत्मा वै प्राणपृष्ठमादिशो मत्पराः एतादेव हि संयुज्यो कर्तव्यं निष्कृतं तद्विष्णुभावेन सर्वसमापरं गुरु दुष्टोहं भोधिश्रेष्ठा नित्यानन्तु मनोरमा सन्तं सावातनीनानि हन्ति हो परत्रः इत्थं विलसिन्यकानि विशतां गुरुविष्णुनि गुरोरनु ग्रहो नैवो पुमान् वर्णं प्रशान्तये श्रीब्राह्मणोवासो किमस्वाभिनिर्वृतं देवो जद्गुरु भवता सजकामेनु तेषां वासो गुरुगुराभवत् दशसन्धो वयं ब्रह्मोदे आपन्नवं विभो शेषां तरुगुरुनु वासो विविरम्भनम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंससंहितायां दशमस्कन्धे श्रीरामचरिते
आशीषी के तमध्याय सिमटाढ़ा गुम के सुटान बल हरि बोल हरि बोल। भगवते वासवाणी एकाशीतमध्याय से अध्याय शिशुवासो जो इथम द्विजमुखेन शोकठांसरभूतम यन्द्रस्यानुवास ब्रह्मणवा ब्रह्मण कृष्ण भगवान प्रशंस्यां प्रेमना निरीक्षिणी निगो प्रेक्षण कलु सतांगति वनवासो क्यूपायानि तं ब्रह्मन्मे भवता विहात अपित्यापारतं भवते प्रिय प्रेमना भुर्जेवमी भवेत् भुर्जप्या भोक्तबलिदं नो मे तोथाव कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्तु पठितमश्नामि व्रतात्मनः इतोर्वेदीये तस्मै तीतो पतये नमो पृथु ऋतं राजं प्रविश्य गवाङ्मुख सर्वभौतात्मकसद्रि तेषागमनकारिणि विद्यायानुचिन्तायां श्रीकामो मा भजत्पुरा पैष्णा प्रतिव्रता मा प्रिया सख्या न प्राप्तो मानुषिदश्यामि संपदो अमृता दुर्लभा इतम जिंदो बसनादि स्वयं दीसनाज स्वयं जहारो की मीट मीति पृथु तंदुलान नन्येतरपा नेतं मे परम प्रियजन सख्ये तर्पयामा स्वमा विसंगे पृथक तंदुला इति मुषं सविद्यच्छा द्वितीयां जन्धु मादति तावसिद्धि हस्ता तन्वखा परमेश्वरो यथावतालं विषात्मन् सम्परिष्ठा समिद्धि अस्मिन् लोके अथवा पुंसां पुंसजतो कारणं ब्राह्मणस्ताङ्गो रजनी मूषिताच्यो मन्दिरे त्यक्त्वा अभूता पीठास्कं मेनि आत्मानं सुर्गतं यथा स्वभूते विषभावेनो सुखानि अनितो जगामो स्वालयं तातो पथ्यानुप्रजो मण्डितः सोचालब्धा धनं कृष्ण नटु दासिवान् स्वयं सुगृहान् बीतो गच्छन् आदर्शनं निर्वृताः ओ ब्रह्मण्यदेवी सुदृष्टा ब्रह्मण्यतो मया जद्दरिदतो लक्ष्मी मासेषु व्युटोऽपि कायं दरिद्रो पापियान् को कृष्णो श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिहोस्नातं बाहुभ्यां परिस्थितौ निवासितो पृषामस पर्यन्के भ्रातृ यथा महिषाभितो प्रान्ता बालभ्यादन्यस्तथा सुसञ्चा परमया पारसंवानादि पूजितो देवदेवेनो विप्रदेवेनो देवत् स्वर्गापप्रगयो पुंसां रसायां विसम्पदां सर्वेषामपि सिद्धीनां मूलं तत्सरणार्चितम् अयनोऽयं धनं प्राप्यो मध्य अर्चना स्वरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे अभुरी नारदात् इति सञ्चिन्तयामृत्यो प्राप्ता निजगृहान्तिकं सूर्यनलेन्दु सङ्काशै विमाने सर्वतोवृतं विचित्रो पवनोश्लादैः कूर्जदीपुण्ये प्रोक्ता फुल्लवदारोम्भो कलहारो परिभिः दृष्टं सोसले पुंभिः श्रीभिचो हरिणखिभिः किमिदं केशवानन्दं कथं तद्दीतयोऽभूत् एवं मीमांसमनतानो नरा नरकोविदो प्रचागनिषु महाभागं गीतवानेनो भूयसा गतिमागतमाप्राणं पत्नादिशिया निष्क्रामो गृह्णातुं न रूपिणी बलस्यात् परिभ्रातोपतिं लब्धा प्रेमोत्कण्ठ्या श्लोचना मिलितख्या उद्धायो मनसि परिषज्यते पत्नी भिक्षो विस्मृत्यो भिक्षा वैमानिकीयो दासिना निष्कण्ठीनां मध्यवान्तिंसो विस्मिता प्रीतो स्वयं तया मूलो प्रविष्टा निजमन्दिरं मणिस्तम्भसतोपेतं महेन्द्रभवनं दधाः पयफेन निवासज्जातान्तारुग्णपरिषदा पर्यङ्का हेमदण्डानि सम्रभ्यगनानि सु आसनासु हैमानि मृदुपसरणानि सु मुक्तधामानि वीतानि जोद्वन्ति सत्स्मृतिकुद्येषु महामरकटेषु रत्नादि प्रभ्राम लालसा रत्नसंहिता विलोक्य ब्राह्मणावधि समृद्धि सर्वसम्पदां
त्रक्यामाशु विनिर्गोषो समृद्धि हेतु किम नूनं बतई तन्ममो दुर्वगेशो सुसद्धर्देशो समृद्धि हेतु माँ विभूतिरलोक काधन्यान्यन्या परिवर्षितोत्तमा नंद भुवानि संतो समीक्षो स्वाचिंदते भुरापि भुरिभोजा पर्जन्यवतां समीक्षमानं साराभिषेकमी किंचित करोति वापि सोदत्तं सूर्योस्मि फलवत्सुभि भूरिकारी वयोपनीतं गुरुकैव्यशेषं प्रदखि किमुदा महात्मा तस्यैव मे सुहृदमात्मदिशं पुनर्जनानि जन्मनि स्यात् महानुभावेनु गुणाफलेनु विशद्दलस्तत्पुरुषप्रसङ्ग भक्ताविशेषभावानि सम्प्रदायं भूतिर्नो समर्थत्यज अदीर्घ घोराय विशेषिनो स्वयं परिसन्निपातो धनिनां मदद्भवम् इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तो तीव्रजनार्दने विषयां जायात खन्भुजे नाति लम्पट तैषो वये देवदेवेशो हरिर्जगपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभावेशं मूले विदितापरम् एवं सुविप्रिय भगवत् सुहृदं त्वरधा शोषणे वे पराजितं तद्ध्यानवेगा प्रीतो तामस्ताय वल्लेवे चिरन्ति घटाङ्गतिम् एतद्ब्रह्मो ब्राह्मणदेवेषु श्रुता ब्राह्मणतां नरो लब्धभाव भगवती बद्धा विमुच्यते इति स्मृतभावमापुराणव्यासिक्यां दशमस्कन्धे पृथुकोपाख्यानं नाम एकादशीतमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशीतमोऽध्याय श्रीवासो अथैकदा द्वारवृत्तां वसितो रामकृष्णयो सूर्यापरागि सोमार्षे कल्पखेव महाजा तङ्ख्यात्वा सुमाराजन् पुरस्तातीव सर्वतो समन्तपर्तन्तं खेमो जजो श्रेयो विधिविष्या नि क्षत्रिणां महिङ्कुर्वं रामो ससुविताम्बरो निपानारुधिरव्रेणो चक्रे महारथान् ईशेषु भगवान् रामो यत्रा स्थितोऽपि कर्मणा लोकं सङ्ग्राहणीयंशो यथन्ये अगाधपनुपनुत्तये मैत्यां च यात्रायां तत्रागन् भाति प्रजा भक्तियंशो यथा क्रूर अवतीव बहु कार्यो निजभातो तत्क्षेत्रं क्षमस्सं कवियस्निभो गतप्रादुरवासंज्ञो सुचन्द्राशुभकारग्नि असेव निर्धीरथायां कृतवर्मनानो युध्यतो ते रथैरापिष्टञ्च हिव्योत्तरपल्लवे गजैर्नद्भिर्वाब्रावैः विधिवन्द्यार्दुद्भिः सद्योचन्द्रो महानिजेतेजा महाकञ्चनमालिनो दिव्यास्त्रक् वसनाहन्याकलत्रैः खेसरायिवो अतृष्णात्वा महाभाग्या उपज्यो सुषमा च ब्राह्मणेभ्यो दद्युवद्रोहनिकुल्मानि रामदेशी विजयवत् पुनराप्युतो कृष्णे ददु अन्नं दिरागेभ्यो कृष्णेनाभक्ति व्रन्दितो संयुतनुभ्रातो कृष्णयो कृष्णदेवता तत्त्वपदिवो कामं संध्याये पाङ्गृषु तत्रागतांसु दिशेषु मत्संविरोमनिम्यसेनानरोकल्या विदर्भो कृष्णज्ञान् कम्बोजकैकयान् वज्रान् कुन्तीनामदेकुलान् अन्यां चैपक्षवादारं परांसु सरस्वनिभो नन्दादीन् सूरितो गोपान् गोपीशो कथितो शिरम् अन्यस्य दर्शनाल्हांसा प्रफुल्लधर्षा सरोरुहस्या आशो गार्हणेनैः सबद्दला ऋषभसो रुद्धकीरयो जदुर्मुदम् स्त्रियं च संवीक्ष्यो मीठो वदन्त्यादिजौ लघुबोधसादिशतिशो अव्ये स्तने स्तनान् कूष्मपुङ्गरलूनं नियतादुर्भिः प्रणयासु लोचन ततो विभज्यो ते वृद्धान् जलिष्ठैरा विवादितं स्वातं कुशलापत्न पुरुषाचक्रु कृष्णकथामिथ पृष्ठाप्राटीनविजो स्वपुत्रां विदाराय भ्रातृपत्नी कुन्दजहौ सङ्कथयासु च कुञ्चुवासो अर्जो भ्रातरमहं नन्ये आत्मानमसितान् तद्भावसुमद्वातां नानु स्मसुमसप्तमा
श्रीरोग्याठे पुत्र भ्रातरो विजरा विनाशन्ति जेति सुजन तद्व्यादेयमखिना शिवश्री उवाच अम्बोमस्नान श्रीयस्नान महान ईशेशो शिवसे लोको कुरुते करते सा कंसप्रतिहामि सर्विद्या जातादिसंगसं येतावदि पूर्णस्नानं दैव्येना प्रसादिता सत शिशुभासु वसुदेवा उपदेशेनान् अजैवि दधिभिः श्रीरानिवा आसन्नाच्युत सर्वासा परमानंद निर्वृता विष्णु धूनो विकानंतो गंधारी श्रुता सता सरासां सदारा पशुवा कांति पुण्य संजीव विजरो कृपा पुण्य मोजु विराटसो भीम को नरजारितां पुरी द्रुपद शल्याधिष्ठकेतु सो काशिरा दमको सो विशालाच्यो मैथिलो मदरके करो जुधामिन्यो सुधर्मासुधरा बब्निकरार्यो राजा नेशो जेरा जुधिष्ठिर मनुव्रता निकेतं विभूषितं हस्तकं भिक्षु विस्मिता अथोते रामकृष्णाभ्यां सन्न प्राप्तो अजनासुदुत समुदाभुजा विष्णु कृष्ण परिग्रहम् अहो भोजपति जूयं जनभाग्यो नव्यो जत् पैसा यथाकृतं कृष्ण दुर्मति योगिना द्रविग्रम जातो निसंग पुनाति पादानवयो जानत शास्त्रम बहुकाल चक्रायोपि जरंघी पद्म सौति भीर्नान खिलाना तद्दर्शन स्पर्शनानु प्रसख्या सज्जानुलेपिसा जौन विघ्नमंद जेसांगृहे निर्वपर्पणितासांबो सुपर्जा वर्ग विषयो स्वयमासु विष्णु सुपास नंदा तत्व जन प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोहमान तत्रागमतो विष्ण गोपैरना स्वार्थै दिदीख्या तंजुषा विष्णु स्वार्था प्राणी निवागते परिसज्जादिते गुरहां चीरदर्शन कातरा वसुदेव परिसज्जो संप्रीतो प्रेमिलो चरणो कुशानुरकेशान् प्रेम्यो गोकुले कृष्णराम परिसज्जो पितरामाज्यो आभय लोकिन्दनादे प्रेम्णा प्रेम्णा शुश्रुकण्ठो कृद्भः रोहिणी देवकी चाठो परिसज्जो बृहस्पतिं स्मरन्तो तत्कीर्तिं मैत्रीं पाशकञ्छो समुचतु का विष्णुर्यथा वां मैत्री निर्वृतां बृजेश्वरी अवाच्यो मन्दिरं विसर्जं जैष्यानिहो प्रतिक्रिया यथा वृता पितरो जुवायो पितरो सम्प्रीषणं निवापञ्चोपालनानिषु प्रत्युवा परिभोजि विष्णोः जद्वैख्यन्यस्तोपककुश भयो नु शतां परं स शिशुवासु गोप्यासु कृष्णोपलभ्यो श्रीराविष्णुषो प्रेरणोदेशो पद्मरितं सपन्ति दिग्भिर्परिशोचिलं किमिदं पारसार्गो नित्याभिरां दुरापरं भगवान्ताभिभूताभितो सूर्यसंगमाशेषामायां प्रेषो शशानि ब्रवीत् अपि स्मृतो नो सख्यो स्थानानि चर्या गतां श्रीराधेतां सकृपख्या पनचेतसा अप्यावधाय श्रीकृतं ज्ञाता नूनं भूतानि भगवान् जुनकी विधानिषु यथा स्वानि कंकैतीनं यथा जांसी सर्वेभ्यः विहिते भूतानि भूतकृत् मयि भक्तिः भूतानामुपलब्धिदिष्टा वरासिं स्नेहावती नामरापयो अयं हि सर्वभूतानां मन्त्राणि बहिर्भूतिकानां यथा खं धातुर्वायुर्जगिराठिङ्गना येषु ध्येतानि भूतानि भूतेष्वानि उभयं वदिषु परं पैसत्याभ्यामखयेषु वाचो अजाप्रशिखया गोप्या एवं कृष्णेनो शिखिरा तन्नो स्वर्णबद्धस्तु जीवन को अंतमज्जगतम आहुज्योति नलिना नाभ पंकरा पदारविंदम योगेश्वरादि ही बोधे संसार कूप पतितो तरालनंगीहं जुषानापि मृषदीयात् शरान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसयासिक्यां दशमस्कन्धे द्वादशतमोऽध्याये श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णकथानन्दबल हरि बोल हरि बोल।
तिथिति उवाच नोभति वासवांसि उवाचो भवानुर्विद्यो भगवान् गोपीनांशो गुरुपति सरिशान्तसार सर्वांशु श्रीरन्वरम् तो एवं लोकनार्थं परिषद्यो श्रीशितो प्रत्युत्थानवन्यपारिवसंगत कूटो शिवं तत्सरणां गुरुं दासं तन्मालामुपसंहृत्य कथे पिबनिस्य कर्णपूत्रं प्रबोधेऽहं भूतां सुहृदाशासनं हित्वा वामो परिपूर्णं भारते पुरोगमा कालुपशिषितो अविद्यामोक्तिं परमहंस गतिं नतस्म श्रीवाच इत्युत्तमो श्लोके झिकावनितनिस्यापि वीतास्कन्धः गौरपुररिवो समेत गोविन्दकथामीठो गृह्णं त्रिलोकीगीता श्रीनो बन्यामि श्रीतपुटोवासो हे विदर्भ्याच्युतो भद्रेति दमवति कौशले हे सत्यभामे कालिन्दी शैवे रोहिणी लक्षिणे हे कृष्णवते ये तन्नो ब्रूहि ये तन्नो ब्रूतो भो भगवन् उपसेमि तथा लोकमनुग्रहसवाय श्रीतपुटोवासो त्यज्यायो सर्पयितु मुद्यतो कार्मकेषु राजनिजेयो उचसे निजेनो निजे मृगने इवो भाटमास तस्सिदा जनार्दनो श्री सजवामांसु जो मे सनाता विप्तरो विदुषो लिप्ता सर्वमांसो जित्वासु रन्नमकोटेनो भीतो पदानिपो महाप्रभोपि दत्ता श्रीदम्भवचुवासो प्रज्ञायो जी संकृष्ण मुखार सीतापतिं दीनवत्सतज्यो नव्यमुदत् ज्ञात्वा परिहितो उपहार अर्पणं पादो प्रीज्यो मणिनाः मुषदासि कालेन्दुवासो तपत्योऽन्तिमज्ञायो स्वप्रासफलान् सख्यो पत्याग्रहीपानि जोऽहं तद्गृहमार्जनि श्रीभद्रवासो जो मां स्वयंरूपेत्यो वीत्यो निवीत्यो स्वयमथाग्निबलिदीपारि भ्रातृं स्वमीयनु कृतं श्रियो मपत्यस्मीयनु सभान्वस्तं श्रीसत्योवासो सप्तोऽहमते अभिश्रुति जय पित्रान् कृतावसखीति परखीखिनाय तार्वीन दुर्मराज विजो किरण बबंधु पुरथा शीशो गो जातकान् को जो इथं बिर्या शुक्लांगा दासद्व चतुरंगी पथि निरित्यो राजकन्यानिन्ये तद्दानमस्तु मे श्रीमित्रबिन्दुवाच पिता मे मातृयायो स्वयमाहूयो कृष्णे दत्तवान् कृष्णे कृष्णायो तद्विता मुमुषो सखीजने ऐशो मे पादसंस्पर्शे भवेत् जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम्यमानानाजेनो तस्यैव आत्मनो श्रीलक्ष्मणोवाच ममामि राज्याच्युतकर्मभूत कर्मो अश्रुता मुहूर्त म्लार्दा गीतमानस चित्तं मुकुन्दे किलो पद्मचा पद्मो संसार अश्रुसां विश्वविहाय लोकपान् ज्ञातामो यजिन सभी पब्धि द्वित्रिवत्सलो वृषसेनो ख्याता सतोपाये मची कयत् यथा स्वयंवरे जागी मत्स्ये पार्थस्वया अयं तु वैना येनो दृश्यन्ते शोदले परम् श्रुतैतत् सर्वतो दीपाय स्वल्पीतो स्मरो सर्वसावरभावलापोया सशस पित्रा समुदिता सर्वे सदा यथा विवं यथावरो आवृत्युना परं शापं बुद्धुं वर्षति मान्दिरा आदायो व्यासिजन् कति सैम्यं कर्तुं मनुष्या आकुष्ठं ज्यां समत्कृशोऽपि चूरेको अमुनाहता सज्जं पिता परे वीरा मागधसपोव्य भीषो दुर्योधना कर्णोत्परितासकी कसिं मत्स्यभासं जले वीक्षो ज्ञात्वा सूतरवस्थितं पार्थो जट्टो समाद्भावनासीनं स्विषे परं राजनेषु निवृत्तेषु भगवानसु भगवान् धनुरादायो सज्जं कृत्वाथो लीलया तस्मिन् सन्ध्याविशेषं मत्स्यं वीक्षो कृतले नाथोऽर्थात् सूर्योऽसा विदिति सद्यते दिव्य द्रव्य निजोद्भो षष्ठो दिव्य देवांशु कुसुमासिन मुमुचूरहर्षविभरा तत्रङ्गमादिशं कलयानुपरभ्यां पद्भ्यां समिजो कनकोज्ज्वल कनरत्नमालां नूत्नैः वीरपरिधायो कौशिक्याग्रे शोभिरहासकः कबरीसहस्रः मुनिनभक्तानुकला कुन्दलस्थितं शिशिरहासकटखिमुख्यैः राज्ञो निरिषपरितोषणकैरावृयेण सुनाथाकिं स्वालां तावन्मृदङ्गमधा शङ्का भेदो नकारया नीने दुर्धर्गो तर्को नन्तु गायका जगो
एवं प्रीते भगवती मायेषु निपनंदलो सो नोमी हिरे देजमानी संगश्वेतादस्यातुरा मां तावत् थामारोप्यो हयरत्नकुजस्रो संगमुज्जैनो सन्नद्धो स्थावंगं चतुर्भुजः दारुकमेखाबलयासा कंचनोपस्करोचिं विश्राम्बुजां रगिभ्रियायां जगिरारिभो तेषसर्जन्तो राजन्यानिषितं पतिरोचतं सन्दिद्यावदरिता शीघ्रामसिंहा तथा विराम ते सङ्गच्युतकृतिभ्या शङ्करानिपीतो प्रथमे केचित् जीवे सन्ध्यजो दद्रुभो तथा पुनङ्गतुप्येतरिषां रवि सद्यसरां पत्रतोरणां कुशस्थलिङ्गी विभूभि चषितां सख्यामि सर्वे सुखेषितो पीता मे पूजामासु सुहृद्बन्धुबान्धवान् महारः वासोऽलङ्कारे सज्जासनपरिषदे दासीभिः सर्वसम्पद्भिः वरितेनादिभिः आयुधानि मारहानि ददौ पुण्येषु भटिता आत्मारामशुद्धे सेमा भयं हि गिरिरास्मिका सर्वसङ्गबीजर्व्यटाटवसाचो भूमिभो महिषौचो भौमनेजो सवनं तराजुधीत द्वितीयनो तथा ज्ञाताथो नो जीतिस्मय जीतिदे जीतराजकन्या जन्मोत्सव संशीति बहुलोकसमासो सन्ध्यपराम्बुजं परिणायो सो आप्तकामो नोभयं शब्दि साम्राज्यं स्वराज्यं बहुजनाप्यो वैराज्यं पारमिष्ठञ्चो आनित्यं सो हरिपदं कामयाहं यतसेयुसीमपादरजो श्रियो कुशकुमराज्यं साम्राज्यं मूर्नामोरं गराभीतो बृहस्पतियो दाब्लहि पुलिङ्गनीरो गावन्वसरजो गोपा पारस्वर्षं महात्मना जिस महात्मा पुराण पर व्यासक्याम दशमस्कंधे दशी तत्वध्याय विष्णु धारा गोठ हरि बोल हरि बोल। भगवान सदृशी तमध्याय शिशुवासो श्रुतापृथा शूलपुत्रो विजयसेनी महोजसा प्रतिपदत्यो ऊतु सवर्षा कृष्णाखिलो कर्माणि हरो प्राणयानुबन्धं सर्वाभिषु बलरारि कला संकुलख्या इति संभाषयामासु श्रीविनिपो आजजू नक्षत्रा कृष्णराम दिखया दैव्याननादेशु सबनो बिलोहितो विश्वामितो आनंदो भजभ्या गौतम राम शिशिरो भावान् विशिष्टो गालवनुगो पौलस्त्या कशो हितो मार्कण्डेयोठो बृहस्पति शीतशीतविभुवनाशो ब्रह्मपुत्रा तथा अगाधवसु सामेषु वामुदेवा वापरे तान् दृष्ट्वा सशुद्धायो प्रगादिन्निपम्बया पाण्डवाक्षरामौषु प्राणिमु विषदण्डिता तान् निर्दिष्टा सर्वा संयामुष अर्थे स्वागता निर्वासिद्बदुलप्यखने वा सुखमासीनं भगवान् धर्मगुप्तै सत्सस्तैषु महितो ओ सदवा निष्णतो श्रीभगवान् वासो अहो वयं जन्मगतो लब्धङ्कासेनो तत्तत्फलं देवानापि दुष्प्रज्यो तद्योगेश्वर अर्दर्शनं किं स्वल्पमपसाङ्गीनां वर्षायां दिवसविषां दर्शने स्वस्ना प्रश्नगोपदर्शनादिकं न जस्मयामि त्यक्षानि नो देवा निशिलामयोति पुण्यजुकालेनो दर्शनामयो सारभो नग्नानि सुनाथविलङ्घं समनोदंश उपासिताभिशून्यारन्तमूर्तिरो जैसानुविन्दकीपनोग्रासन शशिकुलत्रावि भीमुजासि जैसे बुद्धिशैल्यनो करिजे गोमठो शुकुवास निसम्यतं भवतो कृष्णशाकुनमिरशिवजो दुरत्यं विप्राणादिस्मान् सुदिशा तीरं स्वराज्यो मुनिः श्रेष्ठोटार्यं जनसङ्ग्राहो इत्युक्तो समायान्तं जगद्गुरुं श्रीमुनियोषु धन्वाया तत्त्वविदितमान्या विमोहिता विश्रीयानीश्वरा दलिवशिखया यो विजितं भगवद्विशेषितम् आनियो यत भुवाको ध्यानं सिजत्यति पद्यते मनः भौम्यर्हि भूमिर्वदनारूपी अहो विन्मयाथरितं विरम्बनम् अथाहि काले स्वर्णाभिभूते विवर्मिषट्टं कलन्यग्रहायो
सलीलया वीरवसं सनातनं वर्णश्रमं पुरुषं परो भवान् ब्रह्मते धियं शुक्लं तप स्वाध्याय संयमे बाटो अलब्धं संयतवान् ततो परं तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनि धमात्मनो सवादेशे सद्वां तद्भावासे च ब्रह्मान् अज्योमि जनसाफल्यं विषयाद्याप्रसुनं तया संगम्यो संवज्यो धरन्तं शेषां परो नमस्तस्यै भगवते कृष्णावते मीनसे सूर्योगमायामि परमात्मने नोजं विजन्ति भूपा एकरामच्यो कृष्णयो माया जवनिकासन्नमात्मानं कालमीश्वरं जठाशयानो पुरुषो आत्मानो गुणविनानामात्यन्द्रिया भातं नो विदुरेचं परम् एवं त्वानामतेषु विषेन्द्रियेषु माया विभ्रजितो नो विदुस्मित्यु तत्प्लवा तस्यासुतो दिशामोगमेजो धीदितर्चनं श्रीपकजोयि तदुषितवाद्याद्विवासो आपुर्जवन्मिदभक्तान् शिशुवासो इत्यानुग्राप्यो दशार्हं दशदास्मन् युधिष्ठिरं राजर्षि वसुवासं गल्गु मुनियो दयमना तद्विक्षोटान् प्रविज्यो वसुदेव मानसाप्तनैम्योचर्यासि वासे सुसञ्जितासि उवाच नमो भो सर्वेदेभ्यो ऋषयो सूर्यमिश्रो कर्मणा क्रमारमतो भर्ता सा निबोधतां स्नानुवाच नारीचित्रमिदं विप्र वसुदेवो भूषरा कृष्णं मत्वार्भका जन्मो पृशति श्रेयो मन्नहं सन्निकर्षयचो मर्तानाम् आदिकरणं यथा गङ्गं हीत्वा परिणेशन् यशेज्जाति शुद्धे जथान्योद्भूतानि कारणं प्रत्यानिके यतो अमिके गुणतो वा कुटचिनो परिषसि कंक्लेशं परिकृत्य गुणानुहाय व्यारीतमिके जियतं प्राणादिविश्वविरुद्ध्या मन्येतो सुसूर्यमीवो म्यर्थमिहोरपरागे अथो सुर्मणियो राजन्नभ्यानुकुटुण्डिवे सर्वेषां स्मृतान् राज्ञान्तरैवोच्युतमुयो कर्मणा क्रमनिहारो येषोऽसि धूनिर्वृतो श्रद्धायाद्वद्बीजं सर्वजोजोगेश्वरमथै चिन्तयो वसवो जाग्रं लोकविभि सरसकृशातिशितो सोमो जोगो धर्मचा कल्पमुदारिदम् अयं सत्यानो पन्थोदितादु मोहिनं च श्रद्धया विवर्गेनो शुक्लेनेशितो पुरुष दीपरिसना यज्ञदानै हिमदानि तोरणै आत्मलौक्यमनं देवो कालेनो विश्वखिनो ग्रामे त्रैविना सर्वे जमुवीरा तपोवनं बाणैस्त्रिभिः जतो कामो देवऋषिभिर्नां यथा जज्ञाध्यायतनापुम्बै शैशे निरिष्टो त्रिजन्यपेत् तं त्यज्यो मुकोदभ्यां वैरिपुजो मरेते यज्ञैवानमुचेतो अन्यरितो अर्शन्य भव वसुदेववानूनं त्यक्त्वा भक्त्या प्रमया हरिं जगतामीश्वरं सर्वप्रासदद्वां पुटुगां गतः इसुवासु इति तद्वचनं श्रुता वसुदेवं हामनाथानि स्वामी बप्रेशानि काश्यप्लवितो तोयमनुजो राजन्विता धर्मेण धर्मकन्ते नामं ख्यते मखैरुत्तमा कल्पकै तदेक्षतां प्रवय्या कृष्णो पुष्पलक्ष्मणं स्नात्वा श्वासो राजानाशूलङ्कृता तन्मयि सज्जो मुदिता निष्कण्ठं श्वासो दीक्षा शाला उपाजग्नु रालेप्या वस्तुपानय नीदुर्मृदङ्गपतिहा सङ्गभरजानकेषु न सन्नत्याख्या तुष्टुभु सूतमागता जगु सुकण्ठ्या गन्धर्व्या सङ्गीतं सह भर्तिका तमेवसिञ्चन् विवितमदनात्यक्तमीशो पत्नीभिः रष्टादशभिः सोमराजा विरोभिः तरिदुकुलभरिजा पुरकामा कुण्डले संकृताभिः दीक्षिणो गीतसंगीता तद्यसरिता महाराजो रत्नकौशेवाशाश्रयशिष्या वीरेजो यथावृतो सनोद्धरे तदा रामस्य कृष्णस्य स्वयं विदीर्घपरो हरेजतु स्वस्मददिशो जीवितो स्वविभूतिभो ईजेनुज्ञातं विना अग्निहोत्रा सुलेखना प्रगृतैर्वैज्ञानक्रियेहनं क्रियेश्वरम् अर्थातिक भोगाभ्योदरात् काले जठामनाथं सदक्षिणा
सलंकृतेभ्यो अलंकृतो गोभूकन्या महाधना पत्नी संज्ञा विवटेश्वरी पावो मर्षयो पत्न्यो राम हृदय विप्राजमानसपुरा स्नात सलंकृता वासु वंदित मारस्तेव ततो सलंकृतो वर्णाश्रमविभ्यो पुद्रय बंधुन सदा रामान ससुरान परिवरेनो भूयज विद अबद शोगा कुरन काशी के कया संजयान सरस्वती गणान्नूतु चरान श्रीनिकेतम अभिज्ञाप्त संसंतु प्रजोदुदम क्रतुम धृतराष्ट्र अनुजातो पार्थो भीष्मो द्रोणो पृथा बभो म्लार्दो भगवान व्यासो सुजित संबंधी बांधवा बंधन परिषद्यो यदुन सौरितमात्मन चेतसो रघुवाहर कृष्णो सूर्यानुपत्र वेदना नंदस्तु भवान गोपा बरहिन्या पूजित्वासु कृष्ण रामो उग्रसेना अजय वासित बंधु वत्सला वसुदेवो अंजस्वतर्भ्या मनोहर नानुबन सुरीदोति पितमनानंदमाहो करे स्मिशन शिवसुवासो भ्रातरा श्रीकीटोषा पाशो नीनाग्यो स्नेहमरितोतं द्वेष्टजंगमनो सुरानापि जोगिनाम् अस्मा अश्वप्रतिकल्पे वज्रपीठगेषु शतमयि मैत्रापीठफलाचापि नो वीर्तेतु कर्हिषि प्राकल्पासु कुशलं भ्रातर्वो नरनार्षु अधुना वटनिकामानोपैषन् पुरः शत महाराज्यो श्रीभूतप्रातो शेषकामैषो मानतो अजानभूतो बन्धुन्भानोपश्यति जरान्धकृत यशुवासो एवं सूर्यमर्थेशो आनन्दनिभि रुरोधो तत्कृतां मैत्रीं स्वरजस्वी विलोचना नंदस्तु सख्यु प्रियकृत्यम्ना गोविंद रामयो अज्योषु इति मासांस्तिं जलिभिः मतोऽवसत् ततो कामैः पुर्यकामो सुब्रजो सौ बान्धवा परिधावाख्यौनादि खड्गार्य परिसरे वसुदेवो उग्रसेनाभ्यां कृष्णो उद्धवबलादिभिः दत्तमादायो परिचर्या जापीतो जदुभिर्जजौ नंदो गोपासु गोविंद शरणं मुझे मनोक्षिप्रं पुनर्वर्तु मीना मथुरां जजौ वनुषु प्रजातेषु वृषयो कृष्णदेवता विख्यावाविषयां जजु द्वारवतीं पुनः जनेभ्यो कथयञ्चाकृ जदुर्देवामहोत्सवं जरासित तीर्थयात्रायां सूर्यसन्दर्शनादिकम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे तीर्थयात्रा अनुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीमद्राधागुरुप्रसादप्रदान बल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna